All right, work की बात कर ली. Now let's talk about weather, basically your living lifestyle. एक बंदा जैसे ग्रो करता है इन द लाइफ इन करियर, so lifestyle changes. वो कितना चेंज हुआ है for you basically in 4 years, and linking with, I think it's just linking with your lifestyle, weather, and overall, like what has been for you in Dubai, Abu Dhabi, like this place, how it has evolved in 4 years. Dubai, actually, Dubai and Abu Dhabi are completely like, I feel like opposite cities, like vibe-wise and environment-wise. But lifestyle has obviously changed when you come from Pakistan. But weather is not very good, especially this year. It has been like terribly hot outside. You cannot stay, or you cannot even walk to the taxi. Like it's so hot. So you have to stay indoors, which is not very good, because even after work and you have weekend, I have weekend, but I cannot go outside because I know it's so hot, or I have to stay indoors. So you will go to malls, and you cannot go to beach, you cannot go to any other places that is outdoor. So weather wise, it's not, I don't think so it's very good. It's like, extreme is not good. And here the pleasant weather is like for only few months, like you can get from November, December, January, Feb. Extreme this time March was also very bearable or nice weather. So I was like March, even in March. So but after that, it's the extreme level. So lifestyle has definitely changed. You grow as a person in your communication, especially in your dealing with people. Like I have come across lots of people from different environment, backgrounds, countries, and adopting with them, learning. Every person is different. So I think growth wise as a person, UAE has offered me a lot, and I grew as a person a lot herein, and I learned a lot from different people from different background. So I think it was very good, and they give you the liberty to be yourself. uh I will not comment any, I will not make any controversial comment like about Pakistan, you can't be yourself and all. But here is there is a freedom to be yourself and how you want, and you evolve as a person when you become independent. So in that term, UAE has been very good, but weather-wise, I don't feel very good about it. It's horrible. I was there in April on secondment, and even in April, those hot breezes just blowing me away. But this What was this time their record has been like broken for like in the UAE history. Like it's very hot, and then you have to come, like I know indoors is very chill and like you have ACs, but you can't go outside. It's so Yeah, hot that you cannot take a walk, you cannot go to the store, you cannot go for groceries, you cannot do, you have to order everything at home. yeah, that's terrible. UK की बात करें तो I think of course UK, anybody who hasn't been to UK, और जब तक मैं भी नहीं आया था मुझे भी नहीं पता था. The weather is of course quite sometimes pleasant, sometimes it's quite bad कि बारिश होती रहती है पूरा दिन and just doesn't stop. तो आप वही छाता लेके निकल जाओ बाहर and do your things with rain. और ये UK में almost like I think 20-30% of the time in whole year it's always raining. So you have to bear with that. तो एक तो ये चीज़ है. दूसरी चीज़ जो मुझे पता नहीं थी and I think it's quite different is summers में 10 साढ़े 10 बजे अंधेरा हो रहा है और winters में 4 बजे अंधेरा हो रहा है. So it was quite new thing फेस करनी पड़ी थी व्हेन आई केम टू यूके फर्स्ट टाइम. मैं सूरज की रोशनी में मैं खाना खा रहा हूँ, डिनर कर रहा हूँ रात को 8 बजे, और व्हेन इट्स लाइक प्रॉपर डे. तो इट वाजंट फीलिंग लाइक डिनर, बट ये डिनर था. अच्छा सही. खाने का टाइम हो जाता था 8 बजे. सो दैट्स द थिंग अबाउट यूके's वेदर. कुछ एरियाज में कोल्ड है, लंदन इज बेटर, लिटिल वार्मर. बाकी बाकी कुछ एरियाज लाइक छोटे सिटीज डिपेंड करता है साउथ में और नॉर्थ में हो कहाँ पे हो, तो उस हिसाब से द वेदर चेंजेस एज वेल. बाकी जो है आई थिंक लाइफस्टाइल ओवरऑल, personally I think, and you talked about कि controversial comment ना करूँ, I think I can vouch for, मैं I don't mind saying things boldly Okay. on the face of everybody कि भाई मसला है. There are issues, and Yeah. it's not about Pakistan, it's about Pakistan, India, Nepal, etc. On all those kind of the work culture is quite different वहाँ पे as True. against UK. I think UAE में भी issues हैं industry में. I don't know about exactly, but firms are still more progressive क्योंकि उनको एक global lead follow करनी पड़ती है in their career and in their
करियर के जो गोल्स होते हैं लोगों के, या उनकी जो पीपल पर्पस बेस्ड प्लानिंग होती है, इंडस्ट्रीज लिटिल मोर वर्स इन यूएई इस चीज के अंदर, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, एंड अगेन सेम Exactly, प्लेसेस, यू हैव exactly. टू स्टिक टू दैट. Here I think you drive your own career, your own life. मेरे लिए True. भी पाकिस्तान से आते हुए it was quite difficult to navigate the whole challenges. नंबर वन तो लैंग्वेज का चैलेंज था. यूएई में स्टिल देयर आर पीपल जो लोग उर्दू में, हिंदी में बात कर लेते हैं, इवन इन रेगुलर बेसिस. पहले ऑफिस में भी आपको बहुत लोग मिल जाते हैं. यूके में when somebody comes, आप नोट करोगे कि इवन आपका फेलो पाकिस्तानी या इंडियन वो भी इंग्लिश में बात करेगा आपसे. इवन एक पास वाला शॉपकीपर है, वो पता है मुझे शक्ल से दिख रहा है कि देसी है, बट दे विल टॉक इन प्योर इंग्लिश. पाकिस्तानी, पर ओ सॉरी, उर्दू में बात करेगा, ओ इंग्लिश नहीं, में बात इंग्लिश में, करेगा, दे सॉरी। विल टॉक इन इंग्लिश. सो इट्स जनरल एक्सपेक्टेशन कि आप उस चीज उसी तरह से रहो यहाँ उसको के लोकल इन्वायरमेंट के हिसाब से. दैट आई थिंक. और उसके अलावा आई थिंक इन वर्क वाइज आपको एक लिबर्टी दी जाती है. यू ड्राइव योर ओन करियर, आप खुद देखो चीज़ों को, कोई आपको ये नहीं बार बार पंच नहीं करेगा, एंड यू ग्रो इन दैट फेज. सो आई थिंक पर्सनली इट हैज बीन रियली रियली वंडरफुल इन यूके. ऑफ कोर्स बात जहाँ पे आती है आखिर में वो कि मनी की बात आती है यूके वर्सेस ट्रू, यूए के अंदर, तो वो एक वर्क कल्चर में यहाँ पे या पूरा इन्वायरमेंट, वर्क कल्चर, वेदर वाइज यूके विन करता है इन चीज़ों के अंदर. मनी वाइज या आपकी जो फैमिली करीब है उसके अंदर यूएई विन कर रहा है क्लियरली. और डिपेंडिंग ऑन प्रायोरिटीज, आपकी जिंदगी में प्रायोरिटीज किस जगह पे किस चीज़ की हैं. समटाइम्स यू वांट मनी, एग्जैक्टली, there's a clear केस. मेरा एक दोस्त था और उसको यूएई से भी ऑफर थी, यूके से भी ऑफर थी, एंड यूके ऑफर वाज क्वाइट गुड. असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे थे, एक टेक्निकल टीम के अंदर जॉब थी, एंड ही वाज ऑफर्ड फेयर अमाउंट. और यूएई में भी ऑफर थी एक सीनियर लेवल की. द रीजन ही वेंट टू यूएई कि उसको, उसकी फैमिली को इमीडिएट पैसों की जरूरत थी. बेसिकली दे वांटेड राइट, मनी. अब यूएई में अच्छा पैसा मिल रहा है, सो ही हैड टू स्पेंड 2 years इन यूएई, अर्न सम गुड अमाउंट. उसके बाद यूके आया रीजन ट्रू, ट्रू, आफ्टर दैट. सो ही हैड टू लीव दैट पार्ट जस्ट बिकॉज ऑफ मनी. अदरवाइज देयर एम्बिशन वाज कि अगर मेरे पास पैसा है, आई डोंट हैव दैट स्कार्सिटी, एग्जैक्टली, so you will always prefer this location. And यूके, मैं यूके की बात नहीं कर रहा सिर्फ. I think there are a lot of locations, यूके, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा. there are a lot of locations लोग प्रेफर कर रहे हैं. और काफी लोग अभी आते भी हैं विदाउट एन इश्यू. so ये एग्जैक्टली, इट्स वेरी ट्रू एंड राइट. एंड मैंने यहाँ केस भी देखे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर मैरिड और यू आर हैविंग किड्स, people don't prefer like to stay here because school fees are very very high. Like people who are working from like senior supervisor level, AM level, they want, like in UK they give this facility, even you have not obtained your passport, they will give free education to your child. So yeah. बहुत सारे लोग इसीलिए like they left the job and they moved to UK because here you cannot afford schooling fees unless you are very very at a very good position, because school fees are very very high. So at that level I've heard like about health facilities in UK are not very much better than UAE, but UAE has better हेल्थ फैसिलिटीज हियर. बट आप एजुकेशन को देखो अपने बच्चों की, तो फिर आपको जाना पड़ेगा. तो Yeah. अंटिल यू आर सिंगल, यू शुड सेव फॉर योर सेल्फ एंड देन यू कैन मूव. so आप ये कहना चाहते हैं सिंगल यूएई, मैरिड यूके, मतलब आप मैरी होके फिर यूके आएंगे. All right, let's keep that aside. So I think, yeah, I think that's the last point I'll cover from UK side, and then we will hopefully close this video. UK श्योर, में, of course, health is not, well, it's a government-based health setup. पूरा आप जो पैसे पे करते हो वीजा के टाइम पे, एंड इवन जनरल एक्सपेक्टेशन कि आप जो पैसे पे कर रहे हो टू गवर्नमेंट, तो उसमें आपकी हेल्थ कवर होती है. सिस्टम इज रियली गुड, बट कैपेसिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा हो गए हैं यूके के अंदर इवन आफ्टर एग्जैक्टली, कोविड. तो आपको यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट एन अपॉइंटमेंट, एक रेफरल, एंड देन जब तक बंदा, और आई नो पीपल जो पाकिस्तान इंडिया से ट्रीटमेंट करवा के आए हैं बिकॉज दे डोंट फाइंड दैट टाइम, जहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही टाइम पे, सो दे जस्ट वेंट ओवर देयर. वहाँ पे आपकी कमाई का आपने थोड़ा सा स्पेंड भी कर दिया, एंड यू गॉट अ रियली गुड ट्रीटमेंट बैक होम. सो लोग करवा के आते हैं, ऐसे भी केसेस हैं. सो हाँ, यस आई थिंक, एंड यूएई में प्रॉब्ली इतना मुझे आइडिया है कि आपकी एम्प्लॉयज की मोस्टली इंश्योरेंस होती है, मेडिकल इंश्योरेंस, तो इट्स प्रीटी मच यस, कवर्ड यस, यस, पता नहीं अक्रॉस. चलता. एंड आपको कोई इमरजेंसी में वेट नहीं करना पड़ता. लाइक आई हर्ड अबाउट, लाइक इन यूके इवन इफ यू आर इन इमरजेंसी यू हैव टू वेट सम टाइम टू गेट यस, दैट. 2-3 घंटे Here, लग I जाते, चार cannot घंटे even imagine that if there is any emergency and I will wait. No, I will be given priority, like regardless, regardless of insurance you have, you will be given priority and you will get like on immediate basis. और अच्छा खासा like ख्याल भी रखते हैं. और I know like different firm offer different insurances, so I don't think so मेरे ऊपर health की वजह से इतना burden पड़ता है, नहीं पड़ता.
like except for dental and आई optics, ऑप्टिक्स, हाँ ये तो हर जगह वो पे। कवर्ड नहीं होता। हाँ आई थिंक एजुकेशन जाने पहले आई थिंक प्रॉब्ली एक किस्सा जो मुझे याद आ रहा है, आई कवर ब्रीफली। यहाँ पे एक दोस्त का जो है वो गिर गया बेसिकली फ्रॉम स्टेयर्स, थोड़ा सा उसको बिल्कुल ना, वो एक पाँव में कुडंट मूव। तो somebody called the emergency helpline of NHS। वो इतने सवाल पूछे उन्होंने, 5 मिनट सवाल पूछे हैं कि आखिर में कंक्लूड हुआ कि अगर बंदा बेहोश तो नहीं हुआ, ही इज ब्रीथिंग, सब कुछ पूछा है, बोला ठीक है ये सब सही है, तो वी कांट सेंड एम्बुलेंस, तो आप लेके आए। तो और some horrible cases होते हैं, because at this place I think it's quite right now बड़ा मुश्किल हो गया है यूके के अंदर to अगर स्पेशली इमरजेंसी है। नॉर्मल लाइफ स्टाइल इज फाइन। एंड आई थिंक एजुकेशन साइड डेफिनेटली अग्रीड, बहुत सारे लोगों का एक रीजन है यूके और बड़े कुछ कंट्रीज के अंदर मूव होने का, बिकॉज एजुकेशन इज काइंड ऑफ फ्री फॉर एवरीबॉडी। ऑफ कोर्स कुछ एक्सपेंस थोड़े बहुत होते होंगे, लेकिन मोस्टली यूर स्कूलिंग एंड एवरीथिंग इज कवर्ड बाय गवर्नमेंट। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, अरबों पे लेके आए, तो प्राइवेट स्कूल्स भी हैं यहाँ पे, बट मोस्टली गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ दैट, which saves you a lot of trouble, क्योंकि as you said यूएई में, and I heard as well, काफ़ी पैसा around, अगर आपके 2 बच्चे हैं and if you are earning like 15-20,000 AEDs, like you are spending a lot on education already, आपके पास बचेगा नहीं कुछ ज़्यादा खास एग्जैक्टली, after that। आई तो हर्ड कि 50K समथिंग से तो लाइक एक अच्छे स्कूल या अमेरिकन स्कूल, ब्रिटिश स्कूल 50K समथिंग पर ईयर से शायद स्टार्ट है। तो अगर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर ले तो आपको अच्छे खासी अमाउंट चली जाती है पर मंथ। yeah, true. All right, I think we covered a lot in this video, और of course बाकी लोग comments में बताएंगे कि क्या जानना। I think we covered a lot really। एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर देखा यूके वर्सेस यूएई में, हमने उस पर बात कर ली कि यार इट्स इम्पोर्टेंट समटाइम्स टू अर्न मनी, समटाइम्स टू लिव लाइफ, और डिपेंड्स ऑन एवरीबॉडी कि क्या करना चाहता है, क्या करना चाहती एग्जैक्टली, है। सो लॉन्ग टर्म में आपके क्या गोल्स हैं, आपको क्या चाहिए, क्या but अचीव करना है, but सेविंग्स आपके लिए ज्यादा overall इंपॉर्टेंट है। overall I have seen कि लोग यूएई जाते हैं and they don't move back, they come to then European countries or America or some other countries, वहाँ पे फिर अपना करियर बनाते हैं after earning handsome amount। और या तो लोग ऐसे भी होते हैं जो यूके वगैरह से पासपोर्ट एंड आईएलआर वगैरह लेके दे शिफ्ट बैक टू मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज एग्जैक्टली। in industry and they earn really handsome amount, so it's a two-way street। हर किसी के अपने choices है, we can't judge anybody on the choices। Any final comments before we close this? Like this moving back to Middle East, I recalled one in like a scenario, a case, like with my friend, like he was offered job in he was associate here, like he was hardly earning 10,000 dirhams, and he qualified and he got job in London, and then after spending 1 or 2 years, he was offered job in here in UAE like 25 to 30K। अगर वो ये यहाँ स्टे करते तो उसकी सवाल ही पैदा नहीं होता, उसको 20,000 दिरहम का कोई इंक्रीमेंट होता है। लेकिन दे UK is a more developed market, so even if you get that experience and you don't get any like ILR or passport and you come back, you will still get a very good amount, but he didn't leave obviously because आपको आखिर तक रुकने के बाद आपके ज्यादा बेनिफिट्स हैं यहाँ आके। True। So that's right, like most of my friends or people uh, who went to UK, they are saying that they will come back again to Middle East Yeah, because of the packages that they offered to other passport holders. definitely, definitely। इस पे तो कभी सुकून से बात हो सकती है कि इनके, of course a lot of people approach me as well and I know how different it can look like कि अगर मैं जब वापस अगर मूव करने की सोचता हूँ तो it can be a really really generous package, जिससे आजकल फुटबॉलर्स को सऊदी अरेबिया ऑफर कर रहा है, so not that high but Sheikh, Sheikh will remain Sheikh. all right, I think that's been really great। Thank you very much for this session today। Thank you so much for this meeting. All right. Thank